हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द लास्ट मॉड्यूल ऑफ द आरबीसी डिसऑर्डर्स का चैप्टर। इस एंटायर पूरा चैप्टर में वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी एनीमिया रिक्वायर्ड, बी हीमोलाइटिक हो, न्यूट्रिशनल हो, हाइपोप्रोलिफरेटिव, राइट? सो दिस चैप्टर ना, इस मॉड्यूल ना इज जस्ट अ रैप अप, इमेज बेस्ड रैप अप सेशन है। एग्जाम के पहले एकदम फास्ट रिकॉल होना चाहिए। दिस इज द प्लेस टू गो, राइट? Just listen to it. Don't do anything. Don't write anything. Just listen. I'm going to talk about few important images. That's all. But even though it's a wrap-up session, na, always we require a smile. एक छोटी सी इसमें start करते हो. All the important images in the RBC disorder का chapter, right? So first ना, सबसे पहला target cells. Target cells का दूसरा नाम है कोडोसाइट्स. बुलसेई जैसा ना, जैसा बुलसेई का appearance, right? We have seen this already. एक छोटी सी hemoglobin, then एक pale area, then एक periphery का एक और ring of hemoglobin है. Like a bullseye, like a target, codocytes, right? Electron microscopy है ना, target cells दिखे हैं like a hat, it will be there, right? That's why we call them codocytes, right? So whenever you see target cells ना in any microscopy, पहला thought है thalassemia, alpha, beta, both, right? पहला thought है thalassemia, and that's the first and the most important thing, right? लेकिन सिर्फ thalassemia भी नहीं, like you'll also see them in severe case of an iron deficiency anemia, sickle cell anemia as well, right? Sickle cell anemia or IDA also be, you will have membrane damage, and target cells है ना एक membrane damage का product, that's all, right? दूसरा, so इधर if you look ना at these RBCs, थोड़ा प्रोजेक्शन है ना RBC के सरफेस पे, राइट? सो RBC के सरफेस स्मूथ नहीं है, ऐसा प्रोजेक्शन दिखेगा. ओनली वन थिंग यू वांट टू सी, प्रोजेक्शंस रेगुलर है या इरेगुलर है, दैट्स ऑल. शार्प या ब्लंट, ये ब्लंट प्रोजेक्शंस है, राइट? ये इरेगुलर है, इरेगुलर प्रोजेक्शंस है ना. अगर इफ यू सी इरेगुलर प्रोजेक्शंस, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ एन RBC, आंसर है अकैंथोसाइट्स या स्पर सेल्स. स्पर का नाम इट केम फ्रॉम द काउबॉयज का बूट. अगर देखेंगे लाइक ओल्ड काउबॉय का मूवी इंग्लिश में, लाइक यूल सी while riding a horse ना, शूज में एक व्हील होता है, ब्लंट व्हील, टू prick the horse so that it can run fast, right? उसका नाम है स्पर, right? स्पर सेल या अकैंथोसाइट्स. एक important MCQ point, it's seen in A beta lipoproteinemia. Very important thing, right? अगर the most common है ना, is obviously liver disease, right? But liver disease has not been asked in question, but A beta lipoproteinemia has been asked like 3-4 times in exams. So please remember them. Why it is seen? Simple है ना, RBC का membrane, कोई cell का membrane what is made of? Phospholipid bilayer है ना. A beta lipoproteinemia, no beta lipoprotein, यानी liver disease. Liver fail होता हो, obviously you not have good amount of like LDL, VLDL and lipoproteins, right? In both है ना, there'll be an abnormal lipoprotein, right? Abnormal phospholipid bilayer. If the phospholipid bilayer is abnormal, obviously you'll have irregular projections. हम बोलते हैं acanthocytes, ठीक है? That's all. 3, here इधर भी projections है ना, इधर भी projections है, इधर भी projections है, right? But the main important thing ना, दी सेल का प्रोजेक्शन थोड़ा रेगुलर है, राइट? अगर व्हेन यू सी अ रेगुलर ब्लंट प्रोजेक्शंस, दोनों ब्लंट है, राइट? रेगुलर ब्लंट प्रोजेक्शंस ऑन द सरफेस ऑफ द RBC, हम बोलते हैं एकेनोसाइट्स और बर्र सेल्स. एकेन मींस लाइक अ सी पॉर्क्यूपाइन का अपीयरेंस, राइट? थोड़ा स्पाइक्स है, राइट? रेगुलर ब्लंट स्पाइक्स है, एकेनोसाइट्स और बर्र सेल्स. Classical case of CKD or uremia, right? This is seen in everyday life routine of a pathologist. Very common thing, right? Perfect. अगर spikes हो थोड़ा irregular and it is sharp, right? Sharp broken edges, हम कहते हैं schistocytes या fragment cells. We saw them in the recent lecture of the autoimmune hemolytic में ना. This is produced because of mechanical destruction. याद रख लो, MAHA, micro angiopathic hemolytic anemia, या DIC हो, TTP हो, HUS हो, any place where it has a mechanical destruction, यानी prosthetic valves, right? Prosthetic valves, I told you ना, बोला था ना, it came in previous MCQs, remember them, right? Broken RBCs, your schistocyte, right? Or fragmented cells. There is one more thing which I told you that time only. When there are only दो sharp edges ना, हम बोलते हैं helmet cells. Helmet cell also seen in the same condition. ये भी broken RBC था, थोड़ा uniform से break किया, that's all, fine, perfect, right? So दूसरा thing of this module है ना, RBC का inclusions. See, the entire RBC module है ना, we have read lots and lots of inclusions like Heinz Bodies, right? एक RBC का inclusion है ना, Basophilic Stippling, right? Quite a few RBC inclusions are there. How to diagnose them if it comes in an image? एक simple सा flowchart, a table है. First and the foremost thing ना, you have to see
इमेज और एक स्लाइड क्या स्टेन है, लीशमैन या न्यू मेथिलिन ब्लू, राइट, लीशमैन या न्यू मेथिलिन ब्लू, NMB फॉर न्यू मेथिलिन ब्लू. हाउ विल यू नो? Simple to simple. RBC अगर रेड हो, it's a Leishman stain, red or pink, whatever you want to call, right? अगर RBC bluish हो, new methylene blue, name it's there na, blue color. So whenever the RBC is blue in color, that's a clue here. अगर if RBCs are blue color, that stain is new methylene blue. ठीक है? RBCs are red in color, it is a Leishman stain. Fine? That's the basic thing. अगर if you miss this, entire thing is gone. क्योंकि like the next step है ना, you're going to use the same outline here. Single inclusion, multiple inclusion, uniform, not uniform. अगर if the first thing is a mistake, completely gone. So please make sure to differentiate. You know to differentiate the Leishman stain and new methylene blue stain. ठीक है? So now you have a microscopy where there's an RBC inclusion in Leishman and there's a single inclusion. Every inclusion na will be bluish in color, be it in Leishman or new methylene blue. Inclusion का color है blue, that's all, fine. So single inclusion in an RBC, in a Leishman stain हम बोलते हैं उसका नाम है Howell-Jolly Bodies. ठीक है? Single inclusion in a new methylene blue stain हम बोलते हैं Heinz body. याद है Heinz body? वो denatured globin था, unstained coagulum, all those things. हाँ, G6PD same Heinz body. अगर if multiple हो, मल्टीपल ना दो टाइप तरीके से. सो एक थिंग इज मल्टीपल और यूनिफॉर्म. क्या है मल्टीपल और यूनिफॉर्म? सोच लो, इज अ नॉर्मल आरबीसी एंड इंक्लूजन इज यूनिफॉर्मली सीन अराउंड द आरबीसी. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. अगर क्या है नॉन यूनिफॉर्म, अगेन एक आरबीसी थोड़ा इरेगुलर, नॉट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट, हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म. अगर इफ यू सी यूनिफॉर्म इंक्लूजन, थिंक ऑफ बेसोफिलिक स्टिपलिंग. ठीक है, बेसोफिलिक स्टिपलिंग, और हम बोलते हैं इसका नाम स्टिपल्ड आरबीसीस. नॉन यूनिफॉर्म हो, एक और डिजीज है एक और इंक्लूजन है पैपनहाइमर बॉडी. पैपनहाइमर बॉडी ना सिर्फ आयरन की इंक्लूजन था. सो इट इज सीन इन अ कंडीशन कॉल्ड एज सिडरोब्लास्टिक अनीमिया. सिडरो का मतलब आयरन है ना, आयरन का प्रॉब्लम है इधर. सो यू हैव एक्सेस आयरन स्टोर्ड इन द आरबीसी नॉट यूज्ड, हम बोलते हैं सिडरोब्लास्टिक अनीमिया. ठीक है, नेक्स्ट, multiple inclusions in new methylene blue and uniform. So it will be seen new methylene blue का RBC का color blue and uniform inclusion. हम बोलते हैं इसका नाम है golf ball inclusion. Fine? यह है golf ball inclusion. Golf ball inclusion seen in alpha thalassemia. Alpha thalassemia एक टाइप है HBH disease. याद है? We read that in thalassemia module, है ना? So HBS disease, you will see a classical golf ball inclusion, diagnostic B, right? Non-uniform though, it's simple normal reticulocyte. I've kept this so that it looks, the table looks uniform. ठीक है? Perfect. So अगर if you see any RBC inclusion anywhere in the question, please see Leishman या new methylene blue. अगर एक disclaimer था, मलेरिया का पिगमेंट है ना, वो भी will be seen as an inclusion. मलेरिया का पिगमेंट, मलेरिया का सिम्टम अलग है, क्लिनिकल सिनेरियो अलग है. डोंट कंफ्यूज विद दीज आरबीसी इंक्लूजन. ये सब आरबीसी डिसऑर्डर, हीमोलिटिक एनीमिया का प्रॉब्लम है, नॉट अबाउट द इन्फेक्शन. वो अलग, दिस इज अलग. फाइन, परफेक्ट, राइट. नाउ लेट्स गो टू द इमेजेस. आई विल शो यू एन इमेज. आई वांट यू टू से क्या है न्यू मेथिलिन ब्लू और लीशमैन. देन इंक्लूजन क्या है, सिंगल या मल्टीपल. देन इफ मल्टीपल, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. ठीक है, रेडी फॉर द गेम. यू विल से लीशमैन न्यू मेथिलिन ब्लू. बाय, इजी ना, न्यू मेथिलिन ब्लू. इंक्लूजन single या multiple, obviously multiple. Uniform, not uniform, obviously uniform, right? So new methylene blue, uniform, multiple. Answer है golf ball inclusion seen in case of an alpha thalassemia, one type of alpha thalassemia, HBH disease. Same way you'll go to the next guy. Leishman, new methylene blue. Leishman, single, multiple. Uniform throughout, not uniform throughout. Basophilic stippling था, right? Basophilic stippling ना, अगर कोई disease nuclear maturation के problem, oh, it will result in basophilic stippling, right? You can see them in your megaloblastic anemia. ठीक है? You can see them in your drugs, especially cancer का chemotherapy का drugs. You will see them in एक disorder in WBC, the myelodysplastic syndrome, myelodysplasia, nucleus थोड़ा गड़बड़ है, right? Or even you can see them in lead poisoning. Fine? Even in lead poisoning, you will see basophilic stippling. ठीक है? Basophilic stippling या stippled RBCs. ठीक है? Perfect. Now, next.
Leishman or new methylene blue? Leishman. Single or multiple? Single inclusion. Answer? Howell-Jolly body. Howell-Jolly body ना is seen in any condition अगर spleen नहीं हो, aspleenia or autosplenectomy. Spleen is removed due to any cause. Could be a hereditary spherocytosis, could be a trauma. अगर spleen is not functioning, these inclusions are not removed, stays back. हम बोलते हैं इसका नाम Howell-Jolly bodies. अगर अब Robbins आपके पास हो now, go to the hereditary spherocytosis chapter and the image देख लो, you will see both spherocyte and Howell-Jolly bodies. क्योंकि if you read below that, it will be written a case of splenectomy. That is very, very important. A Howell-Jolly bodies था, right? Perfect, right? Next image. Leishman new methylene blue. New methylene blue. Inclusion single या multiple? Single. It is classical Heinz bodies. Heinz bodies are nothing but denatured hemoglobin and will be seen in, it's nothing but a denatured globin, right? Because of the free radical induced problem, and is seen in G6PD deficiency. Right? Classical diagnosis, right? Next one. Leishman or new methylene blue? Leishman. Uniform, sorry, multiple, single. Multiple. Uniform या non-uniform? Non-uniform है ना? इधर है ना? It's not complete. It's not complete. It's not complete. Please don't confuse this as uniform. A non-uniform है. Compare this with this. A uniform है. Throughout है ना? Now compare. Non-uniform है ना? It is Pappenheimer body. Pappenheimer body is nothing but iron. So it will be positive. कौन सा stain? Perfect. Pearl stain will be positive for sure. And बोलते हैं ना पहले भी it is seen in case of an sideroblastic anemia. It's a classical case of a sideroblastic anemia. ठीक है? Perfect. So we covered almost everything required. Just one thing to complete it. Guys, have so beautiful ring है ना RBC के अंदर. So हम बोलते हैं इसका नाम Cabot ring. Cabot or Cabot, whatever you want to call it. T है ना silence है. Cabot ring है ना, it's seen in same conditions. अगर when you see in basophilic stippling, nucleus का थोड़ा गड़बड़ है, maturation का defect है, same cases you will see this. Megaloblastic anemia, MDS, drugs, कुछ you'll see them, right? Okay, Cabot ring is seen same, it's a nuclear maturation का problem. Normally है ना, it will be an 8-shaped structure. 8, yeah. So either it's like this, 8-shaped inside the RBC or circle B, right? Please don't get confused with the ring forms of plasmodium. Yeah, ring forms nahi hai, ek Cabot ring tha. Again, here the problem is a nuclear maturation problem. Same to same like your basophilic stippling. Okay? Perfect. So that brings us to the end of the entire RBC inclusions with respect to hematology, not due to infections, right? Simple tha. This module na, before your exam, before your viva, be it your internal year, your university year, your NEET PG, just ek baar dekho. This is very, very important. This one can come in an exam, can come in 1 mark for sure, right? So that completes the entire thing of RBC disorders. I hope you enjoyed it. I enjoyed teaching you. Agar at any point of time, na, agar you have any doubt, chota or bada, doesn't matter at all. Doubt hai doubt, that's all. Ping me, I'll be able to clarify doubts, right? So now you deserve a break. Go have a big lunch or a dinner or whatever you want and come back with a very, very, very fresh mind. क्योंकि पहला चैप्टर ऑफ WBC ना थोड़ा अलग यूनिवर्स में है, उसका नाम है बी सेल का जर्नी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा डिफिकल्ट था. सो आई वांट यू टू स्टार्ट विद अ फ्रेश माइंड. गो फ्रेशन अप, कम बैक सून फॉर बी सेल जर्नी एंड लेट्स एस WBC disorders like anything. ठीक है? See you soon. Till then, bye bye from Dr. Ranjith. Bye bye.